all are doing good. So इस बार there is something different for you all. इस बार कोई फंक्शन या फिर कहीं जाके ट्रैवल करने का वो व्लॉग नहीं आने वाला है. इस बार I have many traditional outfits जिसको मैंने हार्डली एक या दो बार ही पहना होगा. So I'm gonna give you the review and the places from where I bought it. And if आपको अच्छी लगती है, you can go to that store and buy it for yourself too. So one by one I'm gonna wear each of the traditional outfits. I'm gonna show you all. आप मुझे comment section में rate करके बताएं which one did you like. So in short, it is a traditional haul part 1. So सबसे पहले किसको try करूँ? First I'll go with this bag and okay. I'll keep this pillow aside. Okay. सबसे पहले सबसे पहले I'm going to this, which is a very beautiful one piece. आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बहुत ही प्यारा one piece है. Not one piece, it's a very beautiful gown. We can say this more promptly. So basically, unfortunately, ये यहाँ से नहीं है, अंडमान के कोई से भी स्टोर से नहीं. This is from Ranchi and it costed me like 3,000 something rupees. So I'll wear it and show you guys. Okay guys, you know what, मुझे इस गाउन की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि इसमें जो ये जो पर्ल्स हैं, ये जो बीड्स जो एम्बेडेड है इसमें, ये स्टिक्ड नहीं है. मतलब 3,000 वर्थ इट है, क्योंकि बीड्स जब स्टिक्ड होती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है. बट इसमें ये देखें, तो आपको दिख रहा हो, ये ऐसे फिक्स्ड है जिसकी वजह से it won't come out easily until and unless आप उसको over rough यूज़ करो. मतलब बहुत प्यारी है. और इस पे जो है, इस पे एक साइड हैंड है नेट की तरह, which I'll show you. You will be able to see in my videos in which I'm wearing it. So just see this pretty gown. Done with the first outfit. Now we'll move on to second one, and the second one is okay, this one. This is one of my most beautiful traditional outfit. ये भी एक टाइप का गाउन है which is very beautiful and which I bought from Ramakrishna, जो Ramakrishna store which is in Bamboo Flat का Ramakrishna store. You must visit it guys. It has like very beautiful dresses for girls, especially for girls. For boys I don't know, like good collections are there and it is a very simple gown. Like कोई work नहीं है इसमें, like hand पे थोड़ी सी work है. देखिए, just a simple, पूरी gown simple है. I'll to wear this and show to you all, but the magic lies in the dupatta. इसकी जो दुपट्टा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. लाइक गाइस, कैन यू सी दिस? एंड इट वाज लाइक
love at first sight. I thought when I saw the cost, it was like exactly 3999, and I still remember it because I thought that the gown is so simple. Then why does it like cost too much? इसकी एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. दुपट्टा का काम है इन शॉर्ट देखा जाए पूरा तो. The gown is completely the wholly fully simple. It's very simple from top to bottom. बस hands पे थोड़े से work है and the rest lies in the dupatta. The life lies in the dupatta of this gown. So in this traditional haul number 1, this is my last outfit, traditional outfit, which I'm gonna show you all, or else video बहुत लंबी चली जाएगी क्योंकि मैं इसे पहन के भी दिखा रही हूँ ना. It will go very long. The video will go very long. Then you all only won't watch it till the end. ये जो थर्ड आउटफिट है मेरी, ये है, ये भी एक गाउन है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गाउन. लाइक इसका कितने प्यारी कलर है. एंड दिस ऑल्सो फ्रॉम रामाकृष्णा एंड इट इज़ लाइक फॉर 2000 समथिंग, 2300 समथिंग. आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली. एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मतलब बहुत सिंपल है. एक क्यूट सा ब्रॉच है यहाँ पे एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ विथ अ दुपट्टा. एक दुपट्टा है इसके साथ विच यू कैन लाइक साइडवेज इसे लगा सकते हो. आई विल शो यू बाय आफ्टर वेयरिंग इट. ओके.
guys, done with the traditional outfit haul number 1. This time with 3 dresses. Video काफ़ी लंबी हो गई, I know, and I hope you all liked it. And next haul part 2, part 3, part 4 सबका वेट कीजिए ज़रूर, मैं आऊँगी जल्दी. एंड तब तक मिलते हैं, तब तक दबा के शेयर कीजिए, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट इफ़ यू लाइक इट. थैंक यू, बाय बाय.